Okay, so in today's session, we'll be deal with problems on profit and loss. So this is my second lecture on profit and loss. If you have not attended my first session on profit and loss, then I'll recommend you to watch that video after this session. So am I audible, guys? Say yes or no. Hi Krishnan, I am fine. Hi Priyanshi. So in this session, I'll be going to deal with problems on profit and loss. Hi Pragya. Hi Gomati Prabha. And I'll also cover some left part of yesterday's session. Hi Shubhashish. So my name is guys Pratik Sir. I have done ME in IT and B in computers. Overall, I'm having 7 years of teaching experience and I have scored 99 plus percentile in con section for many times. So this was all about myself. If you are really interested in joining a group in which you can discuss your doubt, in which you can discuss something related to quant, LRDI and VARC for CAT, you can download Telegram app and you can join Unacademy chat. Link is tinyurl.com/unacademy chat. Yeah, hi gaming. Hi Suresh, I'm safe. What about you? Good afternoon. Hi Sudarshan. So if you're really interested and if you're really liking my video, then I'll suggest you to subscribe Unacademy Plus platform where I'm going to teach something more related to CAT, how to deal with tough questions, how to deal with easy questions, what must be your attempt during all the examinations. So these are plans for that one. And if you'll apply referral code as CAT plus, you will get a discount of 10%. Hi Shivendra. Hi Corona. Hi Vedika. Good afternoon. Good afternoon, all of you. So points covered so far is, in yesterday's session we had covered almost 4 points. First point was percentage profit or loss can be written as selling price minus cost price divided by cost price multiplied with 100. And whenever your answer is positive, that means for sure there will be profit. If your answer is negative, that means for sure there will be loss. Second point that we have covered was if TP of two article is same and profit percent and loss percent is same, then for sure there will be no profit and no loss. This was the second point that we had covered. Guys, am I audible?
Guys, am I audible? Say yes or no. If selling price of two article is same and profit and loss percent is also same. Okay, thank you. Anil, I'm gaming you. You can restart, or you can restart this session. There might be some issues, so you can restart this session. So if selling price of two articles is same and profit and loss percent is same, then definitely there will be loss, and that loss will be equivalent to x square by 100. And fourth point was, I can write discount percent as marked price minus selling price divided by marked price multiplied with 100. So these are the points that we had covered so far. I'll definitely use RAID also. So today's point that I'm going to start with is successive discount. ऐसा कितने लोगों ने देखा है आज तक? Let's say 10, like this one, like 10 plus 20% off. ऐसा कहीं पे देखा है गाइस आप लोगों ने? Say yes or no. ऐसा देखा है कहीं पे? So whenever 10 plus 20% off है, that doesn't mean there will be discount of 30% or there will be 30% off. ऐसा नहीं है. So the thing is, if a particular product is of 100 rupees, पहले अगर मैंने 10% off किया है, then definitely price of that one will be 90. And अभी जो 20% off होगा, that will be based on totally that will be based on 90 only. So 20% of 90 is going to be 20% of 90 is going to be 18. So once again you will get a discount of 18 rupees and you need to pay. That means you need to pay 72 rupees. That means for sure you can say that if 100 rupees का कोई product है and there is a discount like 10 plus 20% off, so you need to pay 78, you need to pay this one, and there will be discount of 28 rupees or 28% because we are using 100. So this is going to be discount over there, over this. So how to calculate is, how to calculate it fastly? हाँ, लूट लेते हैं. मैं भी लूट चुका हूँ एक बार. So first approach is like this one. If there is 10%, I'll take 100. Just try to think, if there is 10% off, that means for sure we need to pay 90% of this one.
And once again, if there is a discount of 20%, that means we need to pay 80% of this. So my answer is going to be 80 divided by 100 multiplied with 90 divided by 100 multiplied with 100 is nothing but 72. That means this much we have to pay. So there is a discount of 28 rupees. This is how we can find by our conventional approach. Yeah, Suresh, that is what I'll explain to you, but plus नहीं होगा. Because अगर plus होगा तो 10 plus 20 plus 200 by 100 that is going to be 32. But 32 ना तो तुम्हें पे करना है ना तो डिस्काउंट है. That's the reason plus नहीं होगा सुयश. Okay, sure. Okay, this time I'll consider 20 and 30% discount. So 20 and 30% discount अगर successive discount मुझे मिल रहा है तो what will be effective discount? So just try to consider, मैंने 100 assume कर लिया है. If there is a discount of 30%, that means you need to pay 70% of this value. And if there is discount of 20%, that means we need to pay 80% of this value. So if whenever I'll consider this one, I'll get, since 0 सारा cancel हो जाएगा, तो 80 by 100 multiplied with 70 by 100 multiplied with 100 is going to be 7 multiplied with 8 is 56. So 56% we need to pay. That means there must be discount of 44%. This must be your discount. Hi Shiv. Pragya, 56 is the percent that you need to pay. So my question is, what will be effective discount? So answer must be 44%. I hope this much is understood to you. इतना समझ में आया है guys? So let's see shortcut on this one. Okay, my first question was to find effective discount of 10 and 20%. This was my first question. My second question was effective discount of 10 and 30%. 56 is the amount corona that you need to pay. Just try to think, if there is 30% discount, that's the reason you are paying 70%. If 20% discount, that means you are paying 80%. So 56% is the percent that you need to pay. That means there is a discount of 44%. Okay. So the one thing that you have to think in this method is you have to consider discount from shopkeeper's perspective. The only thing that you need to remember is you have to think discount from shopkeeper point of view. So what I'll say is, अगर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है,
जस्ट शॉपकीपर के जैसा थोड़ा सोचो. इफ अ शॉपकीपर इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, दैट मीन्स फॉर श्योर वो थोड़ा लॉस में जा रहा है. If a shopkeeper is again giving a discount of 20%, that means for sure वो थोड़ा तो लॉस में जा रहा है. So always try to consider discount as shopkeeper point of view. That means you have to consider all the discount as negative. And we'll use that same thing, x plus y plus xy by 100. And since these two are negative and that is direct discount, so I'll consider minus 10, minus 20, and since minus into minus will become plus, so 10 multiplied with 20 divided by 100, and this is going to be minus 30 plus 2, that is minus 28. Since ये मैंने पहले ही explain कर दिया है, try to consider discount as negative. So for sure this is discount. You can find answer as this. इस भी मेथड से निकाल सकते हो. नेग्लेक्ट माइनस ओवर हियर. द ओनली थिंग इज यू नीड टू कंसीडर माइनस. ये तुम्हें मन में रखना है. यू कांट से माइनस 28% का डिस्काउंट है. So that's the reason answer of this one must be 28%. So second, अगर मैं सेम यहाँ पे देखूं, just the only thing that you need to know is you have to consider this one as minus. So minus 20 minus 30 plus 20 into 30, and the reason is ये minus यहाँ पे plus हो जाएगा divided by 100. You will definitely get your answer as minus 50 plus this one is going to be 600. 0 cancel. So plus 6, and that is 44% will be my answer. So this is the way you can find effective discount over here. ये समझ में आया है गाइस? से यस और नो तो मैं आगे बढ़ूं. Say yes or no guys fastly. Yes, minus only indicates discount, so don't worry about minus. Okay, so just this concept. अगर 100 rupees is my CP, मैंने इसको increase कर दिया है 50% से. That means now this is going to be 150, and I am considering this one as marked price. इससे मैंने marked price रखा है. That means मैं 100 का एक प्रोडक्ट खरीद के ला रहा हूँ, एंड उसे मैंने 150 उस पर लेबल चिपका दिया है. And further on this marked price, I am giving a discount of 20%. So just try to think, on 150 rupees, I am giving a discount of 20%. So 20% of 150 is 15, and 15, that is 30. So for sure, can I say that this 120 rupees is going to be my selling price? So one more thing that we can conclude is, just try to think, whenever CP is 100, इसे मैंने 50% से increase कर दिया, तो my mark price will become 150, and इसमें मैं further 120 rupees discount, further इसमें मैं 20% discount दे रहा हूँ. That means my selling price is going to be 120. So can I easily say that there is overall profit of 20%?
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है गाइस या नहीं समझ में आ रहा है? या दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? So from this, is it possible for me to conclude that 120% of cost price will be equivalent to 80% of my marked price and will be equal to nothing but my selling price? Can I conclude this one, guys? Say yes or no. ये इक्वेशन समझ में आ रहा है या नहीं? अगर ये इक्वेशन समझ में आ रहा है, देन आगे के जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें इसका काफी यूज है। दो क्वेश्चन में तो यूज है। ओके, ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अनिल, डोंट वरी। जस्ट ट्राई टू थिंक, अगर ये 20% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, जस्ट ट्राई टू थिंक, अगर 100 रुपीज प्रोडक्ट है एंड यू आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, दैट मीन्स यू नीड टू पे 80% ऑफ दिस वैल्यू, यू नीड टू पे दिस मच। अभी समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है शुभाशीष? अनिल, आपको क्या नहीं समझ में आया है? सिमिलरली, अगर मैंने 100 रुपीज में कोई प्रोडक्ट खरीदा है और मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कैन आई से दैट जो ओवरऑल सीपी होगा दैट विल बी 120% ऑफ 100 एंड विच इज गोइंग टू बी 120। जस्ट ट्राई टू थिंक, सीपी जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है एंड मार्क प्राइस जो भी है वो 20% से डिक्रीज हो रहा है। तब जाके टू मेक इट सेलिंग प्राइस, मुझे सेलिंग प्राइस के इक्वल लाने के लिए मुझे कॉस्ट प्राइस को 20% से इंक्रीज करना होगा एंड मार्क प्राइस को 20% से डिक्रीज करना होगा। तो आर यू गेटिंग मी अनिल? आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? टू मेक इट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मुझे कॉस्ट प्राइस को 20% से इंक्रीज करना होगा एंड मार्क प्राइस को 20% से डिक्रीज करना होगा। Okay, so now I can write this one as 120% of cost price must be equivalent to 80% of marked price must be equal to selling price. So let's see one more example. ये समझ में आया? मैं इरेज करूँ गाइस ये वाला? मैं इरेज करूँ ये वाला जल्दी फास्टली से यस और नो? इरेज करूँ?
Yeah, after that we can find ratio of MP and CP. That's not an issue. That's the reason I am explaining this equation. So just try to think, अगर मैं बोलूं मार्क प्राइस पे मैंने 40% का डिस्काउंट दिया है and still I am able to get a profit of 20%. Obviously जो भी 20% होगा that will be calculated on CP. तो इफ मार्क्ड प्राइस पे मैंने 40% का डिस्काउंट दिया है and still I am able to get a profit of 20%. So tell me what will be equation or what will be relation between CP, MP and SP? यस सुयश, मैं कल कैट लेवल नहीं, प्रीवियस कैट में आए हुए क्वेश्चंस मैं लूंगा। आज के भी जो क्वेश्चंस है उसका लेवल काफी अच्छा है, 2-3 क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है एंड दैट विल बी डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन तुमने कर लिया, दैट्स द रीजन फॉर दोस डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहां पे नहीं एक्सप्लेन करना चाहता। दैट्स द रीजन मैं यहीं पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। Definitely tomorrow 2:30 to 4 I'll take previous year's CAT question on profit and loss. So answer me, what will be relation between mark price, selling price and cost price? एक आंसर आ गया है, मैं अभी नहीं बताऊंगा ये सही है या गलत है, बट आंसर आ गया है। That is absolutely correct, Priyanshi. So Shubhashish and Priyanshi got the correct answer. So for sure, I can write 120% of cost price will be equivalent to 60% of, ratio is also correct, will be equivalent to 60% of marked price, and that must be equal to selling price. Still, if you are facing doubt in writing this equation, then I can explain it to you again. तो इस मार्क प्राइस इज 200% ऑफ सीपी, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने बोला है, मैंने कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड कुछ बोला ही नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला है, इफ आई गिव अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन मार्क प्राइस and still I was able to get a profit of 20%. So this was my statement. That's absolutely correct, Shivendra. जस्ट ट्राई टू थिंक, अगर मैं मार्क्ड प्राइस पे 40% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मैंने डिस्काउंट बोला भी था, ट्राई टू कंसीडर दैट वन एज माइनस, सो 40% से डिक्रीज होगा, दैट मीन्स यू नीड टू पे
60% ऑफ मार्क प्राइस ओनली, अगर 40% का डिस्काउंट है तो, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर सेलिंग प्राइस. The price at which I am selling something is my selling price. So if I'll give a discount of 60% on mark, sorry, if I'll give a discount of 40%, so definitely we need to pay this much. 40% is discount, we need to pay this much. So for sure I can say that I can definitely write these two things, which is LHS and RHS. So I can write this equation that 60% of marked price is equal to selling price. ये मैं लिख सकता हूँ definitely. And just try to consider this one. Still मैं cost price पे, since जो भी profit होता है वो cost price पे ही निकलता है. अगर 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है, मैंने इसे 140 में सेल किया, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली 40, ये 40 रुपीज का प्रॉफिट मुझे हो रहा है. तो 40 रुपीज में किसका निकालूंगा, 100 का या 140 का? डेफिनेटली मैं 100 का ही निकालूंगा. एंड 40% ऑफ 100 इज गोइंग टू बी नथिंग बट 40%. So I can definitely say that I am in profit of 40% in this case. So for sure, whenever you are getting a profit of 20%, that means you can write 120% of cost price में मैं sell कर रहा हूँ. That means this also must be equivalent to selling price. I hope अब समझ में आ रहा होगा. Since प्रॉफिट जब भी होगा ये पॉजिटिव थिंग है, डिस्काउंट जब भी होगा ट्राई टू कंसीडर डिस्काउंट एज अ नेगेटिव एंटिटी. आई होप नाउ ये क्लियर होगा. So let's see one question based on this. Question is, a shopkeeper realized a profit of 30% even after giving a discount of 30% on the mark price. At what percentage above the cost price is the mark price? So if you are not getting anything, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. You can text, you can chat me related to that. मैं definitely help करूंगा. A shopkeeper realized a profit of 30% after giving, even after giving a discount of 30% on the mark price. So write equation for this one guys, जैसा हम लोगों ने पिछले पार्ट में किया था. What will be equation of these two? चलो दो आंसर आ गए हैं, बट सही कौन है मैं अभी नहीं बताऊंगा, और आंसर आने दो. Suyash 84, ratio is 85.7, Rahul is 85.7, Anil is 130. So there are three answers which are coming out. Absolutely correct. Absolutely correct, Subhashish. Equation will be like this one: 130% of CP must be equivalent to 70%. Umesh Malik 185. चलो चार आंसर आ गए. Absolutely correct, Pragya. 70% of marked price, and that must be equivalent to selling price.
So the only thing is we need to equate these two, और ये क्वेश्चन काफी easy है. Is it possible to say that? Just try to think. Can I say that cost price by marked price must be equivalent to 70 by 130? Say yes or no. Can I write this one? Yes, Shivendra, you are absolutely correct. Can I write this one? Cost price by selling price जो भी होगा, that will be in the ratio of 7 by 13. So I can write percentage change on this one as, since मुझे यही बताना है यहाँ से यहाँ पे increment कितना है, so I can say that percentage change will be equivalent to 13 minus 17 by 7 multiplied with 100, that is 6 by 7 multiplied with 100. So 100 by 7 is nothing but 14.28. So my answer must be 14.28 multiplied with 6. आप लोगों के पास कैलसी है तो फास्टली आंसर में दिस वन 14.28 मल्टीप्लाइड विद 6 कितना होगा. बट सिंस वी आर डन विथ परसेंटेज, इतना करने का जरूरत भी नहीं होना चाहिए था. 7 से 13 आ रहा है, दैट मीन्स मैंने 6 से इंक्रीज किया है, दैट मीन्स देयर विल बी इंक्रीमेंट ऑफ 6 से इंक्रीज हुआ है, बेस वैल्यू 7, 6 बाई 7 मल्टीप्लाइड विथ 100 का होना चाहिए था. तो टेल मी आंसर गाइस, कोई कैलसी यूज करो एंड टेल मी 14.28 मल्टीप्लाइड विथ 6 कितना होगा. I can write like this one. I can split and multiply 14 multiplied with 6 plus 0.28 multiplied with 6. So 14 multiplied with 6 is nothing but 84, and definitely since this is double, तो ये इसका डबल होना चाहिए. दैट मीन्स 168 एंड 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, दैट मीन्स ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा एंड आई विल गेट आंसर एज 85.68, which is my approximate answer. So I guess Rahul Bhatti was correct. Reshu was also correct. Shuyesh and Shubhashish का आंसर एग्जैक्ट था. या विदाउट कैलसी इवन वी कैन यूज. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कैट ही देना है तुम्हें, तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर एग्जाम में कैट कैलसी हो, किसी में ना हो. दैट्स द रीजन विदाउट कैलसी विथ कैलसी दोनों का प्रैक्टिस होना ही चाहिए. अगर कैलसी है तो गुड, नहीं है तो भी गुड. ऐसा नहीं कैलसी नहीं है तो अब मैं कैलकुलेशन में फंस रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट्स द रीजन सारे मेथड, स्प्लिट एंड मल्टीप्लाई का जो मेथड है वो काफी इजी है, so you can use this one. So ये क्लियर है गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखे. If you want to get notification of all the upcoming lectures, then do join and do subscribe this channel and do join that Telegram wala group. So next question for you guys. यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट खत्म होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के. परसेंटेज अगर क्लियर है देन प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं. If you are good with percentage, then definitely you can solve 100% of question from profit and loss. The only thing that you will require, जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, that 5 पॉइंट जो भी मैंने बताया will help you to get your answer fastly.
So just try to answer this one, guys. This one is very easy question. ऐसा नहीं है मैं हर लेवल का क्वेश्चन आज ले रहा हूँ. Easy भी है, difficult भी है. So question is, a man sold a book at a loss of 10%. Had he sold it for 104 more, he would have earned a profit of 10%. Find the cost price of the book. अगर इसका आंसर मुझे ऐसे ही बता दे रहे हो विदाउट यूजिंग रफ वर्क और कैलसी, तो मैं डेफिनेटली समझ लूंगा तुमने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है. नहीं, ये क्लास कैट के लिए है, अनमोल. Just try to attempt this question without using rough work. And while answering, tell me तुमने rough work use किया है या नहीं किया है. That means if you are using rough work, then answer and R. And if you are not using rough work, then WR. After answering that question, you need to write WR and R. R for rough work use किया है, WR rough work नहीं use किया है. सर कैट क्या होता है? CAT is common admission test for MBA, for top level of MBA colleges. That's very good, Dharmendra. If you are using rough work for these kind of questions, that means definitely you need to practice a lot. Just try to think. If a particular man is selling his book at 10% loss, that means he's selling at 90% of cost price. हाँ, मैं वही बता रहा हूँ विजय. Just try to think like this. There is a loss of 10%, that means definitely you need to pay 90% of the cost price. And if you want to get a profit of 10%, that means definitely you need to pay 110% of CP. ये देख के ही समझ में आना चाहिए. 10% लॉस, दैट मीन्स 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस. 10% प्रॉफिट, दैट मीन्स 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस. अगर मैं गैप देखूं दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में गैप है 20% का. दैट इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस. So this is the gap in terms of percentage. 20% of cost price जो भी है, try to visualize this. 20% of CP जो भी है, there is gap in terms of percentage. In terms of number, that gap is nothing but 104. So is it possible to write 20% of cost price as 104? Can I write 120% of cost price as 104? So can I say that 10% will be nothing but 52? So answer is, since 10% is 52, so 100% will be 520. That's correct. This is how we can find this. Yes, Shrija, you are correct. Yes, Shajal, your answer is correct. So for your knowledge, just try to think. Since there is this gap is nothing but 20% of cost price, and in terms of number,
Just try to think, had he sold it for rupees 104, that means अगर ये 104 ज्यादा ले लेता, यहाँ पे अगर x रुपीज अगर ये ले रहा है तो यहाँ पे x plus 104 ले रहा है, that means this gap is of 104 rupees. So definitely we can equate these two. 20% of CP must be equal to 104. So definitely I can say that CP will be equivalent to 520. I hope it's clear. So that is how you can approach these kind of question. ऐसे CAT में आने का chances बहुत ही कम है, but still आ सकता है. But definitely other MBA entrance के लिए ऐसे questions काफी आते हैं. So definitely these kind of question will save your time. So let's see another question. Next question पे चले दोस्त. चलो next one. A sold an article to B at 20% profit. B sold it to C at 25% profit. If the difference in the cost price of B and C is 90, find the cost price of the article for A. So let's see. Talking about A, B and C. चलो एक आंसर आ गया है. If I consider cost price for A as 100, that's correct. That's correct, Dharmendra. 300 is correct. Pratyush, you are correct. सुयश का आंसर सबसे पहले आया था. रेशियो 300 is correct. Okay, without rough work, I got that. मैं विदाउट रफ वर्क भी बताऊंगा, पहले रफ वर्क बता लो. तो फॉर श्योर, क्योंकि हो सकता है कभी डिफरेंस ये जो गिवन है ये एक का कॉस्ट प्राइस और एक का सेलिंग प्राइस हो. दैट्स द रीजन दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नो दिस मेथड. यस, यू ऑल आर करेक्ट. 300 इज करेक्ट आंसर. सो इफ मैंने सीपी अज्यूम कर लिया है 100, डेफिनेटली selling price will be 120 because A is selling the article to B at 20% profit, तो मैं 120 assume कर लूंगा. हाँ, सेकंड आंसर. तो कॉस्ट प्राइस, जस्ट ट्राई टू थिंक. ए 120 जो है दैट इज सेलिंग प्राइस फॉर ए. तो डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस, ये सेल कर रहा है बी को, तो ए के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी कॉस्ट प्राइस फॉर बी. तो 120 इज गोइंग टू बी कॉस्ट प्राइस फॉर बी. तो मार्क प्राइस, sorry, so selling price for B will be, since B is selling it to C at a 25% profit, 25 of this one, 25% of 120 is nothing but 30. So I can say that selling price will be this one. So cost price of these two, sorry, this C is 150. So I'll consider X now.
So if the difference, that means difference between these two is 90, that means for sure 30x is going to be 90, and you have to find cost price for A. So cost price for A is going to be 100x. Since there is a ratio of 1:3, try to do it like this. ऐसा नहीं अब x का वैल्यू लिख रहे हो 30 फिर 100x, ये सिंपल है इसीलिए मैं इसमें समझा रहा हूँ. Try to find ratio. Since ratio of 30 and 90 over here is 1:3, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 करने के लिए मुझे 300 लिखना होगा, and that is my answer. So now talking about ऐसे without rough work, since ऐसा A अगर 100 है तो definitely B 20% से increase होके 120, and definitely C 25% से increase होके 150. Since 150 minus 120, that means 30 unit का जो भी value है that is 90 given है over here. So definitely 30 unit is 90, so 100 unit is going to be 300 since ratio is 1:3. That is how we can find it manually without using rough work. तो आई होप ये समझ में आया होगा. So let's jump to next question. Rajesh marked an article at 60% above cost price. What is the maximum number of successive discount, each being 10%, he can give such that he doesn't make a loss? Once again, okay, once again. A, B, and C. If I'll consider cost price of A as 100x, that means A ने 100 rupees में खरीदा है एक प्रोडक्ट को, and A sold that article to B at 20% profit. That means selling price for A will be 120x. तभी इसे 20% का प्रॉफिट मिलेगा. एंड A ने B को सेल किया है 120 रुपीज में. इन अदर वर्ड आई कैन ऑल्सो से दैट B ने परचेज किया है A से. B ने A से परचेज किया है for rupees 120x. So can I say that cost price for B is going to be 120x? No, 6 is the wrong answer ratio. So since B is making a profit of 20% over here, so 20% of this one, that means 1/4 of 120. 1/4 of 120 is going to be 30. So 30x का profit दिखना चाहिए. तो I can definitely say that ये 150x होगा. So cost price will be, answers आ रहे हैं next question के भी. So definitely अगर मैं cost price C का देखूं तो that is going to be 150x. आई होप ये समझ में आ रहा होगा. सिंस 150 में ये सेल कर रहा है, दैट मीन्स ये 150 में परचेस कर रहा है. दैट्स द रीजन ये दोनों सेम होने चाहिए. नाउ इट इज गिवन दैट इफ द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एंड सी इज 90, दैट मीन्स 150x minus 120x is equal to 90 given है. That means 30x is going to be 90. Just try to find this. This ratio is 1:3. तो अगर यहाँ पे 100 होगा, you have to maintain this ratio over here. That means यहाँ पे ये क्या होगा, 300 होगा. That's the answer. It's okay, Ajay.
Am I audible, guys? एक और कंप्लेन, सर आवाज कम आ रही है. Am I audible? No. Question is, what is the maximum number of successive discount? You have to tell number of discount, that how many time you are going to give successive discount of 10%. एक बार पेज रिफ्रेश कर लो अजय, हो सकता है आवाज आ जाए. तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ कॉस्ट प्राइस अगर मैंने 100 रखा है, दैट मीन्स डेफिनेटली माय मार्क्ड प्राइस इज गोइंग टू बी 160. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट रेशियो. एंड धर्मेंद्र, रेशियोज आंसर वाज द फर्स्ट, आई गेस. रेशियो ने पहला आंसर किया था, आई गेस. रेशियो ने पहले 6 किया था, देन 4 अभी किया है. पहला 4 सक्सेसिव डिस्काउंट जो आंसर था वो सुयश का था. तो नाउ मार्क प्राइस इज 160. जस्ट ट्राई टू थिंक, अगर मैं 10% का डिस्काउंट यहाँ पे पहला दे रहा हूं, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा? 144. या दैट वाज रॉन्ग. वंस अगेन, अगर मैं जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस, अगर मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो दिस मस्ट बी 160 माइनस 16, दैट विल बी 144. वंस अगेन, अगर मैं 10% का इस पे डिस्काउंट दे रहा हूं, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 144 माइनस 14.4, and that is going to be 129.6. अब अगर मैं इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो आई कैन से दैट 129.6 माइनस 12.96, तो दैट विल बी नियर अबाउट. अगर मैं 13 इसमें से माइनस करूं, 13 अगर इसमें से मैं माइनस करूं, जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस, अगर मैं 13 माइनस करूं इसमें से, तो दिस इज गोइंग टू बी 114. 114. So I can write 115.66. Sorry, this must be 116. जो भी हो, इसी के आसपास होगा. अगर इसमें से भी मैं 10% देन अगेन डिस्काउंट दे दूं, दैट मीन्स समहाउ मुझे 11 माइनस करना होगा. अगर मैं समहाउ 11 माइनस कर दूं, आई लेफ्ट विथ 105 और समथिंग. Sorry, Dharmendra, I missed your answer. I am extremely sorry. This is the second time. हाँ, 4 है आंसर. अब अगर मैं इस पे से भी 10% का डिस्काउंट देता हूं, दैट मीन्स डेफिनेटली ये 100 से नीचे आ जाएगा एंड देयर विल बी लॉस. एंड दैट इज हाउ वी कैन से दैट 4 डिस्काउंट ही दे सकते हैं. तो दिस इज जस्ट अ मैनुअल अप्रोच. लेट्स सी सम शॉर्टकट. अगर ये 100 है और ये 160 है, दैट मीन्स इसे मैंने 60% से डिक्रीज किया है, इसे मैंने 60% से इंक्रीज किया है. अगर मैंने इसे 60% से इंक्रीज किया है, दैट मीन्स
60% is nothing but 3/5. That means maximum to make it 100, मुझे इसे 3/8 से डिक्रीज करना होगा. जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस. अगर ये इससे 60% ज्यादा है, दैट मीन्स ये इससे कम करने के लिए अगर मैं यहां से कम कर रहा हूं तो ये डेफिनेटली 3/8 लेस होना चाहिए. 3/8 दैट मीन्स 37.5 लेस होना चाहिए. 4 टाइम्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट है आंसर. 4 टाइम्स 10 10 10 10 4 इज करेक्ट आंसर. So just try to think, अगर ये 60% ज्यादा है to make it equal, ये समझ में आ रहा है या नहीं? We need to, so जो इसे अगर मुझे इक्वल करना है 100 करना है तो डेफिनेटली ये कितना होगा 37.5 और 3/8. क्लियर है? तो अगर सक्सेसिव डिस्काउंट 10 10 10 मैं पहले 2 टाइम लेके देखता हूं. इफ आई कंसीडर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस वन, हाँ ये सही है, ये सही है सुभाशीष. अगर मैं 10 और 10 लू तो आई विल गेट -20 प्लस 1 दैट इज -19. तो ये इससे कम है. जस्ट ट्राई टू थिंक, जो भी वैल्यू इससे कम आता जाएगा वो मैं कंसीडर कर सकता हूं. बट डेफिनेटली अगर मैं 37.5 से ज्यादा डिक्रीज कर दूंगा. थैंक यू अजय. हाँ तो मैं कहा था, अगर ये 37.5 से कम आ रहा है तब तक मैं आगे कंसीडर करता जाऊंगा. एक बार ये 37.5 से ज्यादा आ गया तो मैं कंसीडर करना छोड़ दूंगा. दैट इज व्हाट माय अप्रोच इज. जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस. अगर ये -19 कम है दैट मीन्स यहाँ पे और कोई कुछ गुंजाइश है डिस्काउंट का. -10 -10 एंड -10 अगर मैं 3 बार करूं तो इसका तो 19 है, -19 है फॉर श्योर, वी नो दैट. And for these two we can say -10 -19 and plus this must be 190 divided by 100 and that is going to be -29 plus 1.9 that is will get 27.1 minus में. 4 is the correct answer Aman. So still ये जो है 27.1 आ रहा है दैट मीन्स अभी भी ये लेस है. दैट मीन्स एक और गुंजाइश है अभी तक. इफ आई चेक दिस वन लाइक -10 सॉरी यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेट मी इरेज समथिंग. -10 -10 -10 and -10. This is going to be -19. This is going to be -19. श्रीजा ये मैंने परसेंटेज में कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, स्टिल एक बार देख लो. इफ a number is more than another number by x by y, if a number a is x by y more than let's say b, if a number a is x by y more than b, so definitely b will be less than a by x divided by x plus y. by using this concept मैं इसे 3/8 लेस बोल रहा हूं. So if I just try to find successive change of this one, I'll get -19 and -19 multiplied with 19 is nothing but 361 divided by 100. You will get -38 plus 3.61. That is your answer must be 34.439. So 34.39 is still less than this one. And that is how we can say 4 terms आएगा. यहाँ पे मैं अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा था गाइस. गुड आफ्टरनून दीपक. तो अगर ऐसा है तो एक बार ऐसा लो
फिर ये जो वैल्यू आ गया फिर से एक ऐड करके फिर इसके साथ कंसिडर कर लो, फिर एक और जो वैल्यू अगर लेट से यहाँ पे कुछ भी आ रहा है तो फिर एक और माइनस करके यहाँ पे कंसिडर कर लो. By this approach you will get answer quickly. हाँ, डेली 2:30 to 4 मैं लाइव सेशंस यूट्यूब पे लेता हूँ. सो आई गेस ये क्लियर है गाइज. से यस और नो, ये अब क्लियर है या नहीं? क्लियर है, यस और नो? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. से यस और नो, क्लियर है या नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नाउ आई होप ये क्वेश्चन जो भी है दैट विल बी क्वाइट इजियर फॉर यू, बट डेफिनेटली यू विल नीड टू यूज रफ वर्क फॉर दिस. आई एम लेट सो आई डोंट अंडरस्टैंड. मेरे बाकी के सेशंस जो भी हुए हैं परसेंटेज पे एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे, वो इस चैनल पे अवेलेबल है अभी भी. आप जाके पहले पिछला वीडियो देख सकते हो, देन आई गेस ये क्लियर हो जाएगा. अभी के लिए जस्ट कंटिन्यू विद दिस वीडियो. ये एक बार कंटिन्यू कर लो, देखो क्या है. एंड जस्ट एक बार इसके बाद जो भी मेरे प्रीवियस वीडियो है अवेलेबल वो जा करके देख लो. एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट अगर ये सॉल्व करोगे दैट विल बिकम क्वाइट इजियर फॉर यू. ओके, थैंक्स अमित कुमार फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर गाइज, डू इट फास्टली. इतना टाइम. क्वेश्चन इज Webber sold an article marked at 4,000. हाँ, यहाँ पे रुपीज होना चाहिए, ₹4,000. After four successive discount of 10%, 15%, 20% and 25%. ये मार्क प्राइस है एंड सक्सेसिव डिस्काउंट ये है, और इस पे चार सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद वैभव ने सेल किया है प्रोडक्ट को. इंस्टेड इफ ही सोल्ड इट आफ्टर अ 30% डिस्काउंट, अगर इसने 30% ही डिस्काउंट दिया होता, हाउ मच मोर और लेस मनी ही वुड हैव रियलाइज्ड? नो अमन, योर आंसर इज रॉन्ग. ओके, दैट्स द पारुल का भी आंसर आया है. धर्मेंद्र, योर आंसर इज ऑल्सो इनकरेक्ट. Curious, your answer is 960. Let's see कौन सा सही है, 964 या 960. So just we'll see successive discount of 10, 15, 20 and 25 क्या होगा. For these two, minus 25, and this is going to be plus 150 by 100, and we can say that this will be minus 23.5.
974, 964, 960, 960. So there is a tough fight between 960 and 964. Ratio is also saying 964. Satyajit is saying 974. Corona is saying 2800 after 30% discount. Muskan is saying 964. So I guess there is tough fight between 960 and 964. So whenever I'll consider discount of these two, so this will be nothing but minus 45, and if I'll do multiplication of these two, I'll get 500 by 100, and that is going to be 40, minus 40. And whenever I try to find successive change of these two, I'll get minus 23.5, minus 40, 40 into 23.5 divided by 100. तो इसका वैल्यू क्या होगा guys? Can I write this one as 235 into 4? Absolutely, we can write this one. So 200 into 4 is 200 into 4 is 800, and 35 into 4 is 140. So this will be nothing but minus 63.5 plus 940 by 100, and that is how we'll get 93.5 plus 9.4, and that's the reason we'll get this one as 54.1. So this is the actual discount. Hello Sakshi. So just try to think, actual discount is this one. अब actual question है, this must be your rough work. अब just try to think, 45.9%, if there is a discount of 54.1%, that means we need to pay this one. तो ये अभी इस सिनेरियो में एक पर्टिकुलर बंदा पे कर रहा है, बट व्हेनेवर ये 30% का डिस्काउंट देगा, दैट मीन्स उस बंदे को कितना परसेंट पे करना होगा? 70% पे करना होगा. आर यू गेटिंग दिस गाइज? Yes, 964 is the correct answer. Yes, 964 is the correct answer. Hello, Ronak. So just try to think, with initial condition जो पहला वाला था, we need to pay 45.9, and with the new condition we need to pay 70%. That means definitely, since Vaibhav is shopkeeper, तो definitely इतना परसेंट इसे ज्यादा मिलेगा. That is nothing but 24.1% of 4,000. And 24.1% of 4,000 is going to be, can I write this one as 241 multiplied with 4? So 200, मैं ऐसा multiply करूंगा. 200 into 4 is going to be 800. 41 into 4 is 41. Since 40 into 4 is 160, so 41 into 4 is 164, and that is how I'll get my answer as 964. या इस क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं कर सकते. द रीजन इज, जब तक मुझे सक्सेसिव चेंजेस नहीं मिल जाएगा,
सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे लग रहा है। जब तक मुझे सक्सेसिव परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता इस क्वेश्चन में। ये क्लियर है गाइस? The only tough part in this question is to find successive change or successive discount. So next question करे guys, tell me fastly. ये दोनों का डिफरेंस है। 70 minus 45.9, you will get this one as 24.1. So next question guys. Asha sold 300 pens in a day. She made neither a profit nor a loss on 1 out of every 4 pens that is sold. If she made a profit of 20% on the remaining pens, find her overall profit percent. After discount in this question, there will be a discount of क्या आया था 54.1% का डिस्काउंट आया था सक्सेसिव. If I try to find for -10, -15, -20 and -25, you will get a discount of 54.1. That means you need to pay this one. You need to pay 45.9 since 54.1 is the discount. ये calculate करके देखना आ जाएगा. The only thing that you have to remember is x plus y plus xy by 100, and you have to treat this one as negative because discount hai. So this much you need to pay and this much you need to pay. This much you need to pay with the initial condition अगर ये इतना successive discount है, and this much you need to pay with the second condition अगर if there is a discount of 30%. So since difference of these two is 24.1, that means definitely इतना ज्यादा profit होगा वैभव को, and that is how we can calculate 24.1% of 4,000 as 964. I hope ये clear है. Yes, Pratyush, your answer is correct. 15% is the correct answer. Yes, Biraj, your answer is correct. Yes, Barik, your answer is correct. So just try to think 300 pens में से 1 out of 4, that means one she's selling for no profit, no loss, and remaining 3 with the profit of 20%. Hi Siddharth. So just try to assume, my first assumption will be each pen costs ₹100. Clear है?
And since this is in the ratio of 1:3, that means 75 pen जो भी है, Asha will sold that one for ₹100 only. I guess ये clear है. Since ratio is 1:3, remaining 225 pens जो भी है, that number of pen, ये जो आशा सेल करेगी, that will be with the profit of 20%, that means for 120 rupees सेल करेगी. ₹120, not percent. That means overall अगर मैं देखूं, total CP will be, since 300 पेन है and 100 rupees each, तो 30,000 लगना चाहिए. अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस का बात करूं तो दैट मस्ट बी 75 मल्टीप्लाइड विथ 100 प्लस 225 मल्टीप्लाइड विथ 120. So this must be 7500 प्लस 225 को अगर मैं 120 से मल्टीप्लाई करूं, क्या आंसर आएगा गाइस? I can do like this one, 225 into 12. तो मैं क्या करूंगा, 200 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 200 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, I'll get 2400 and remaining 25 को अगर मैं 12 से करूंगा तो I'll get 300. So this is how we can say 2700 आएगा अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं. सिंस यहाँ पे 120 है तो I'll get 27,000. That means total will get 34,500. So now I hope ये clear है. Selling price is 34,500 and cost price is 30,000. So percentage profit is 34500 minus 30,000 divided by 30,000 multiplied with 100, and you will definitely get your answer as 15% by solving this. So now the thing is, CAT में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो मुंह जबानी सॉल्व हो जाए. You have to do rough work. मुंह जबानी वाले मैंने इसलिए बोला so that your speed, जो भी तुम्हारा स्पीड है वो थोड़ा फास्ट हो. CAT में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो ऐसे ही सॉल्व हो जाए विदाउट यूजिंग रफ वर्क. ये बहुत ही कम चांसेस है. So let's jump to next question now. अब थोड़ा लेवल मैंने और इंक्रीज किया है. देखो कितने लोगों का आंसर सही आता है. A trader purchased two dinner set at prices which are in the ratio of 5:3. He made X% loss on the first set and 2X% profit on the second set when he sold them. In the entire transaction, the trader made a profit of 2.5%. You need to find X. ये अभी तक जो मैंने लिया, I'll say that was moderate. ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बोलूंगा थोड़ा अच्छा है. इजी लेवल जो मैंने कल सारे क्वेश्चंस लिए दैट वाज क्वाइट इजी. मैंने सिर्फ क्वेश्चन वो इसलिए एक्सप्लेन किया सो दैट की कॉन्सेप्ट समझ में आए.
आज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मॉडरेट थे, लास्ट के एक ये क्वेश्चन और एक इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। No, your answer is not correct, Reshu. ये कैसा लेवल है? फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने आंसर किया है उसके लिए ये लेवल कैसा था? Yes, 20% is the correct answer, guys. अच्छा कोई बात नहीं, अमन नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. So I can definitely write selling price of first article as, let us assume first of all cost price of this one is, let's say 5A and second one is, let's say 3A. So selling price one must be written as 1 minus or 100 minus X percent. Let it be 1 minus X percent of 3A. I'm extremely sorry. Selling price 1 must be nothing but 1 minus X percent of 5A, and selling price 2 must be 1 plus 2X percent of 3A. Is it? ये correct है guys equation? Say yes or no. I think so. Question is, a trader purchased two dinner set at prices which are in the ratio of 5:3. He made X percent loss on the first set and 2X percent profit on the second set when he sold them. I guess correct है ये. So for sure I can assume 5A and 3A as the cost price. So definitely this is going to be selling price 1 will be equivalent to 1 minus X percent
of 5A and selling price 2 must be equivalent to 1 plus 2x% of 3A. And whenever we'll add these two, we'll get SP1 plus SP2, and that is nothing but, if I'll add this one, we'll get 1 minus x% of 5A plus 1 plus 2x% of 3A. And SP1 and SP2 is nothing but, the thing is, SP1 plus SP2, since overall, if I try to find overall cost price, so that must be 8A. And since there is a profit of 2.5%, so I can definitely write this one as 1.25% of 8A must be equivalent to 1 minus x% of 5A, and that is going to be 1 plus 2x% of 3A. I can cancel A over here. So this is how we can write equation of this. And after solving this equation, that is 102.5% of 8 must be equivalent to 5 minus 5x%, that is 5 by 100, plus 3 plus 6x%. This is how we can write this. That means 102.5% of 8 must be equivalent to 8 minus x by 100. So whenever I'll shift this 8 over there, I'll get 2.5% of 8 must be equivalent to x by 100. So I can cancel like this one, this must be 8. I can cancel like this one, 2.5 by 100 multiplied with 8 must be x by 100. And if I cancel 100 and 100, I'll get lastly x is equal to 2.5 multiplied with 8, and this is going to be 20. So this is my final answer, guys. I hope ये सभी का आंसर सही आया है. So let's see another question. And if you need time to solve this question, then tell me, मैं इसे homework दूंगा and I'll make sure कि ये मैं पहला question लूं while taking previous year CAT paper. So it's totally up to you. You want to solve this question now, or you need some time to solve this question? I can tell you answer of this question if you want. A trader marked an article at 5x% above the cost price. After giving a discount of x plus 5%, he got a profit of 3x minus 5%. Find his profit percent. Now, very good. So tell me answer, guys. क्या होगा answer? Very good. Abhi.
That's not the correct answer. 25% is not the correct answer, guys. Yes, 40% is the correct answer, guys. And this question is totally based on the concept जो मैंने पहले बताया है, relationship between selling price, marked price and cost price. Yes, 40% is correct answer, Aman. 40% is correct. कैसे सॉल्व किया है तुम लोगों ने? Is it possible to find relationship between CP, SP and MP? Yes, 40% is absolutely correct. Can I write like this? मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं. अगर 100 मेरा कॉस्ट प्राइस है, जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस. अगर 100 मेरा कॉस्ट प्राइस है, मैंने अज्यूम कर लिया, तो डेफिनेटली मार्क्ड प्राइस विल बी 100 प्लस. No, you can't hit and try this one. Can I write marked price as 100 plus 5x? Because a trader marked an article 5x% above the cost price. So if cost price is this, so 5x% is going to be 5x. Because obviously 100 मैंने assume किया, of 100% will be cancelled. After giving a discount of this much percent on the mark price, he finally got. तो मैं सिर्फ hints दे रहा हूँ. Just try to think like this. Okay, you are getting x का value as 15. Okay. तो आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ दिस मच, तो डिस्काउंट अगर मैं दे रहा हूं, तो कैन आई राइट दिस वन एज 100 माइनस x minus 5% of 100 plus 5x. तो दिस इज माई मार्क्ड प्राइस एंड इतने परसेंट का मैंने डिस्काउंट दिया है. लाइक वहां पे मैं जब 20% का डिस्काउंट दे रहा था, तो मैं 100 माइनस 20, दैट मीन्स 80% ऑफ मार्क्ड प्राइस लिख रहा था. एंड यहाँ पे there is a profit of 3x minus 5. So can I write 100 plus 3x minus 5% of 100? Guys, ये लिख सकते हैं, say yes or no. ये इक्वेशन कितने लोगों को समझ में आ रहा है? say yes or no. ये इक्वेशन कितने लोगों को समझ में आ रहा है? For previous video, just search on your YouTube Unacademy CAT, then go in video section
then go in video section, and definitely you will find my lectures over there. So by solving this, you will definitely get extra value, and after that you can solve this question easily. Anyways, I'll explain this question to you in tomorrow's session also. So we'll meet tomorrow at 2:30 to 4, and I'll be dealing with previous year CAT questions. So if you are really interested in joining a group where you can discuss doubts, you can join this Telegram group. These are all benefits of Unacademy subscription. These are the steps for downloading Unacademy app. First, you need to search Unacademy Learning app, then install. Then you have to choose plus, then CAT, and then get subscription. And these are the plans. And if you'll use referral code as CAT plus, definitely you will be getting a 10% discount on this. So these are the different fields in which Unacademy is also available for these kind of courses. So if you really like my video, just subscribe to Unacademy CAT channel and click the bell icon for any notification. Also like and share this video if you like this one. So that's all for today. This is the referral code.